ठीक है, let us do the lesson separation of substances. In the class we had done up to heterogeneous mixture and homogeneous mixture. As you can see, can you tell properties of homogeneous mixture? What type of properties? Matlab, can you tell it has uniform composition or non-uniform composition? Heterogeneous mixture. Can you tell heterogeneous mixture का composition uniform होता है कि non-uniform होता है? So let us do homogeneous mixture and heterogeneous mixture. You can note down the properties. That is, for homogeneous mixture, the composition is same throughout, isn't it? That is, the components are uniformly distributed, so it has same composition throughout. The first point, it has same composition throughout. Or the components are uniformly distributed. Is the board clear? Can you see the things written on it? Yes, ma'am. Okay. Throughout, all the components are uniformly distributed. Next, we will see for heterogeneous composition. So point number 1 for heterogeneous composition, it does not have the same composition throughout. Does not have the same composition throughout. Or the components are not uniformly distributed. You have to note it down. या फिर when I finish it, you can take a screenshot also. So first difference. Now the second difference you can say, that is the second point. Hence its different parts cannot be distinguished from each other. Particles, the different particles, cannot be distinguished from each other. Are you writing the answer? बोलो. म्यूट करो. नहीं म्यूट करोगे तो हम म्यूट कर देते हैं. So just Yes, ma'am. listen me and you will write the answer. Okay, you will write the answer. Okay.
So next, when you write these points, we will deal with examples, which will be the heterogeneous and homogeneous mixture. So the second point of difference for heterogeneous mixture, the different particles can be distinguished from each other. The different particles can be distinguished from each other. Okay, you take the screenshot and then we will give the examples. Take the screenshot. I'm giving you 1 minute time. Okay, now next you can write the examples. That is for homogeneous mixture, salt in water. Example में लिखोगे salt in water, sugar in water, honey in water. You can write this. And for heterogeneous mixture, sand in water. Sand in water. You take this screenshot and I'm just erasing it. All right. Let me erase it. And the next point, what we will do. Let us see the next point. There is one experiment also done in your book, that is for heterogeneous mixture. You can see sand mixed in water. The sand are clearly seen, isn't it? You can see the sand clearly in that one, in the picture. All right. Next, we will talk about that is separating the components. There is one word, adulteration. Adulteration का मतलब होता है मिलावट. Adulteration. That means मिलावट. क्या चीज का मिलावट? जैसे कि खाने में कुछ नकली चीज मिला देते हैं. For example, you can talk about जैसे कि काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं लोग, है ना. काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिए, या फिर चावल में कंकड़ मिला दिए. सफेद कंकड़ है, फिर काला कंकड़ भी हो सकता है. तो इसको कहते हैं एडल्ट्रेशन. घी में, शुद्ध घी में, प्योर घी में दूसरे तरह का घी मिला दिए, डालडा वगैरह मिला दिए. तो ये सब हो गया एडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट. Next we will see separating the components. There are different types of mixtures, like mixture of solid with solid. Can you give an example of a mixture of solid in solid? Can you give? There are solid mixture का example बोलो. Examples of Ma'am, soil. Soil a lot. Yes, Okay. sand. हाँ, Sand. बिल्कुल. Yes, ma'am. Solid mixture. So its example is that is soil. Direct you can give soil. Soil is a mixture of many things. Sand hai, leaves hai, other parts of the plant, and other solid substances are also mixed in the soil. Then we will talk about mixture of solids with liquid. That is a solid liquid mixture. Solid liquid mixture. You can give any example solid liquid mixture का बोलो.
सॉलिड लिक्विड, हाँ देखो सॉल्ट इन वाटर भी हो जाएगा, सैंड इन वाटर भी हो जाएगा, बोथ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सी इन वाटर, यस बोलो, सी वाटर, सी वाटर, यस वेरी गुड, सुगर इन वाटर, हाँ बोलो, सी वाटर, टैप वाटर, isn't it? Sea water, yes, tap water, anything you can get. okay. Then next we can talk about the third one, liquid mixture. Yes, batao. Liquid mixture. We can say for liquid mixture, honey in water. You write honey in water. Lemon in water. Yes. Lemon juice in water. Lemon juice in water. Okay. Lemon juice in water. Yes. Actually, when you mix lemon juice, yes, it is both are liquid. तो ठीक है, इसमें कोई होमोजेनस भी हो सकता है, कोई हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, both time it can be. Next we will talk about next, let me see. Ma'am, gaseous. Gaseous. अच्छा Yes, ma'am. अच्छा हाँ ये तो है, वो तो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है. लिक्विड एंड गैस मिक्सचर में तुम्हारा वो एग्जांपल क्या पड़ेगा, कोई भी जैसे कि लिक्विड हो तो उसमें ऑटोमेटिकली गैस डिसॉल्व रहता है, इसलिए उसका एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिया है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, दैट इज अभी हुआ तुम्हारा पेज नंबर, हम लोग 52 कर रहे थे ना, अब हम करेंगे पेज नंबर 53. पेज नंबर 53. लेट अस डू पेज नंबर 53. देखो पेज नंबर 53 में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेट मी सी इट, Solid. सॉलिड्स विथ सॉलिड्स, मिक्सचर्स और सॉलिड्स विथ सॉलिड्स, जिसमें डिफरेंट मेथड्स है सेपरेशन का, हैंड पिकिंग. Ma'am, tracing और नहीं आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए एक बार हम और म्यूट करें. What I will tell, you will listen just, isn't it? So it creates disturbance. So I'm just giving you a mixtures of solids with solids, the method of separation. Methods of separation. ये हमारा होता है फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन. फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन. So just well, the first we can deal mixture of solids with solids. Mixture of solids with solids. Okay. Mixture of solids with solids, under this comes first one, hand picking. tracing. Yes, yes. Let us see it. Then threshing. It's all right. Ma'am, winnowing. Threshing. And then the third one comes to winnowing. Ma'am, winnowing. Yes, winnowing. Ma'am, sieving. ठीक है, sieving. Sieving. Okay. Any other? No, ma'am. नहीं, ठीक है. तो let us discuss one by one this physical method of separation, that is solid mixture. What I am giving you, Yes. the homework for you here. I am giving the homework here. Write it down. Homework में यहाँ पर सारा जो है विनोइंग नहीं आ रहा है,
Oh, sieving. ठीक है, it's all right. It's coming. So let us see here homework. That is, give 2 examples of each. Give 2 examples of each for separation of solid mixture. ये होमवर्क लिख लो. solid mixture by different methods. Okay, by different methods. Now we will discuss about the different examples here. First one, hand picking. Example is separation of pebbles from rice or dal, or separating grass from mint leaves, or any other example you can note it down. But you should take care that separation should be of solid mixture. Once more, I am giving you the example: separating pebbles from rice or dal, or separating grass from mint leaves. Now the next one, what comes? Threshing. In threshing is done mostly by machines, because and here the example is the dried stalks are beaten and the husk is separated from the grains, isn't it? Separation of husk, yeah, stalks from the grains. Then there comes your winnowing. Winnowing is a process in which it is used to separate lighter husk from heavier grains. It is another method. पहला जो मेथड थ्रेशिंग था, उसमें हम लोग थ्रेश करते हैं, जैसे उसको ना कंप्रेस करके रगड़ा जाता है. और विनोइंग एक ऐसा मेथड है, इट इज ऑल्सो नोन एज एयर ब्लोइंग मेथड, विंड ब्लो मेथड. तो विनोइंग का नाम जो है विंड ब्लो मेथड भी है, विंड ब्लो मेथड. इसमें हम लोग हिंदी में कहते हैं फटकना कहते हैं, ठीक. तो थ्रेशिंग हो गया तुम्हारा मशीन से, उसको कंप्रेस किया जाता है और भूसी को अलग करते हैं, स्टॉक्स को अलग करते हैं. और इसमें जो है विनोइंग विंड ब्लोइंग मेथड, जिसमें हवा में उड़ा दिया जाता है. उसका जो हस्क होता है, लाइटर हस्क, तो हवा के कारण वो उड़ जाता है. देन कम्स योर नेक्स्ट वन. उसके पहले एक बात और बता दे, डू यू नो. हाँ, कुछ ना डू यू नो में लिखा हुआ है. डू यू नो में है द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द राइपेंड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग एक्चुअली कटिंग होता है. जब फसल को काटा जाता है ना, तो उसको हार्वेस्ट करते हैं. तो एक जमा करना भी होता है और काटना भी होता है. तो उसको काट के जमा करना, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपेंड क्रॉप. जब फसल तैयार हो जाता है, उसको काट के हम लोग जमा करते हैं, तब उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं. सो यू कैन नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज हार्वेस्टिंग. You note down one more question, what is harvesting. This one is question number 1, and this one question number 2. What is harvesting? What is harvesting? You can take from your book, you can take help from your book and write the answer. Next is combine. A farm machine called combine is used for both हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. तो कंबाइन, एज द नेम इंडिकेट्स, कंबाइंस मींस बोथ होता है. तो एक फॉर्म मशीन जो है यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए, फॉर काटने के लिए भी और थ्रेशिंग करने के लिए भी. दोनों काम एक ही मशीन से हो जाता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं जो मेथड रह गया, दैट इज सीविंग. As you can see in the picture, sieving देख रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग चलनी कहते हैं, जैसा कि जनरल शब्दों में लोग रीजनल भाषा में जो कहते हैं. This method is used to separate the components that are of different sizes. और इसमें components जो है different size के होंगे तभी separate हो सकता है. जैसे कभी कभी हम लोग चावल में ना
छोटा छोटा चावल टूटे हुए रहते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए sieve का यूज करते हैं. And in English it is called as sieve. The apparatus is sieve. So you can see in the picture also, the bigger particles are separated from the lighter particles. The bigger particles are separated from the lighter particles by using the sieve. So this method is used to separate the components that are of different sizes. For sieving, a sieve is used. तो sieving करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यदि आवाज आती है तो बोलो. नहीं आ रही है. अच्छा. Yes, ma'am. sieve यूज करते हैं. कोई बात नहीं. I am giving you because it creates disturbance. That's why. A sieve is used. A sieve is a wire mesh fixed tightly in a frame. Everyone must have seen this sieve. दो तीन बहुत तरह का शेप में आता है वो मार्केट में, और उसका जो होल्स होता है वो भी अलग अलग साइज के होते हैं. कुछ बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे साइज के होते हैं. कभी कभी बड़े पार्टिकल्स को हमें अलग करना रहता है तो बड़े साइज का छेद को यूज किया जाएगा. In this method, the mixture to be separated is put in a sieve. The particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the large size particles remain on the sieve. Sieves with different sizes of holes are used for different mixtures. At home, sieving of wheat flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse particles. आटा चालने के भी काम में लाता है लोग. At construction sites, देखा होगा जहां बिल्डिंग बनता रहता है वहां बालू को चालता है. जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं सैंड में वो सेपरेट हो जाएंगे. बड़े बड़े पेबल्स होते हैं सैंड से, वो सेपरेट हो जाते हैं. So at construction sites, sieving of sand is done to separate fine sand from the gravel and pebbles. The sieve used there is much bigger in size, and the size of its hole is also big. ठीक है ना? तो let us 5 minutes more. तो यहाँ पर हम लोग 5 मिनट और कर लेते हैं. I think everyone has written the homework. होमवर्क लिख लिया है ना तुम लोग? Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, दिया हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन. ये भी तुम्हारा सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए है. मैग्नेटिक सेपरेशन. As the name indicates, magnets are used here. So which type of particles will get separated by the magnets? यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो. Let me add it. Magnetic separation. Magnetic separation. So which type of particles can you separate by using magnets? Iron, isn't it? Which are magnetic. Iron, cobalt, nickel. Magnetic separation method of separation is used when one of the components of a mixture is magnetic. That is, it gets attracted towards a magnet. For example, when a magnet is brought near iron pins, the pins tend to cling to it. The property of attraction of magnetic substances like iron towards magnet is used in to separate out such substances present in a given mixture. As you can see in the picture also, isn't it? There is a magnet. All of you have got your books and you can see the picture. तो एक मैग्नेट नजर आ रहा है सबको, और पिंस है, तो iron pins that are clinging to the magnet. And in the next one, you can see here that is with the help of cranes, जो कचरा में से जो iron pieces हैं, क्रेन की मदद से कचरे में से iron pieces को निकाल लिया जाता है. ठीक? I think up to this much it is clear. क्लियर है ना? बोलो. अच्छा, आवाज तो पूरी तरह से बंद हो गई तुम लोगों की, तो इसको हम कैंसिल कर दें.
Oh, I don't know how to cancel it, but okay, it's all right. I will learn it. Now ending the meeting, it's enough. आगे तो कोई points नहीं है. Let me see here. Further, there are points. Yes, there is more points. It is sublimation. Sublimation is also a solid-solid mixture separation. You can add here sublimation also, isn't it? So let me write this side. The sixth one, that is sublimation. Sublimation. The sixth method of separation of solid-solid mixture, that is sublimation. Is there any more? Okay, so let me end it because it takes time to reach there. We have to send it also for this videography. All right. So good day to all of you.